So, welcome to the first episode of dhtml subject. This is the extension of the HTML subject. HTML is hypertext markup language and dhtml is dynamic hypertext markup language. In my previous session, I have discussed about the static and the dynamic concept, but still I am going to repeat that concept because we have to start with that dynamic word. Though we are going to start our journey with the dhtml subject. That's the dynamic HTML. Why it is called dynamic? Because as I have earlier discussed in my previous video that the static thing or the dynamic thing, whatever you are going to code or the perform through the HTML tag, right? So that web page is static. Why it is a static language? Why it is called a static web page? Because max to max you can use like p tag, the paragraph tag, apply headings, contents, image, tables, frame set, you can draw the elements, but there is no interactions. Only the end user can get the information from your web page. उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है. वो वेब पेज ओपन करेगा, जो भी इंफॉर्मेशंस आपने दिए हैं वो रीड करेगा, इफ़ ही वॉन्ट्स नोट डाउन करेगा, अपने माइंड में रखेगा, दैट्स इट. देयर इज नो इंटरेक्शन. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपके वेब पेज में आप लॉगिन पेज क्रिएट करो, सो दैट्स कॉल्ड अ डायनामिक थिंग. Why it is a dynamic? Because login पेज में क्या चाहिए आपको? ID चाहिए, पासवर्ड चाहिए. किससे चाहिए? जो ये वेब पेज एक्सेस कर रहा है, किसके लिए चाहिए? For the security purpose you are asking the ID and the password from the user, right? अगर ID and password नहीं है, so you will require registration form. So registration form, fine. So रजिस्टर करने के बाद लॉग इन कर सकते हो, like that. So registration and login, it's a big task. For that you will require a database connectivity as well. So not only अगर database connectivity आई तो सिर्फ dynamic HTML भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेटा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप स्टोर करोगे कि ये मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मेरा जेंडर ये है, हॉबी ये है, मेरा आईडी ये है, एंड सो पासवर्ड विथ फोटो, लेट्स से फॉर एग्जांपल. सो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा. कहाँ पे स्टोर होता है? डेटाबेस में. डेटाबेस के अलावा ये कहीं पे स्टोर नहीं होता है. एंड वेब पेज से जावास्क्रिप्ट थ्रू आप कोड कर सकते हो. इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग similar to the programming, but JavaScript is not a programming language, it's a scripting language. So वो प्रोग्रामिंग करके, वो स्क्रिप्टिंग करके आप क्या करोगे? जो आईडी एंड पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटाबेस में स्टोर करवाया, राइट, वहाँ से वो फैच करेगा, फैच करके चेक करेगा कि वो पुराना आईडी एंड पासवर्ड और ये करंट आईडी और पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है वो सेम है. अगर है तो वेबसाइट एक्सेस होगी, आई मीन ओपन हो सकती है, अदरवाइज ओपन नहीं हो सकती है अगर आपका आईडी एंड पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो. सो दैट्स कॉल्ड इंटरेक्शन. आप यूजर से कुछ मांग रहे हो, यूजर आपको कुछ दे रहा है, राइट. सो दैट इज द इंटरेक्शन. क्या मांग रहे हो? आप यूजर से सिंपली डेटा ही मांग सकते हो, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास से आप कोई एक्शन मांग सकते हो कि आइदर क्लिक ऑन ओके बटन और क्लिक ऑन कैंसिल बटन. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन. सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द डायनामिक थिंग, राइट, वेयर द वेब पेज एंड यूजर कैन टॉक, can interact by whichever way.
So for providing that dynamic thing, we need a JavaScript as well as jQuery. Now this subject, the subject code is BCA 2502, dynamic HTML and XML. We have 4 units. The first unit is CSS. CSS is what? It's a cascading style sheet. Using CSS, you can design your web page. Design in terms of a look, the appearance, right? Though you can design a web page using HTML tag, but for providing the more attractive look, so we have CSS, because there is a limitation in HTML tag. We have font tag, we have color attribute, right, size attribute, but वहाँ पे बहुत limitation है. If you have 3 paragraph and all 3 paragraph needs a same color, so आपको हर एक पैराग्राफ के लिए बार बार फॉन्ट टैग यूज करना है, बार बार उसके कलर मेंशन करने हैं. सो CSS से ये सारे कोड्स ओवरकम हो जाएंगे. So it's a next extension of the HTML. That's why it's called a dynamic, and it's included CSS as well. जो लंबे लंबे कोड है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे. JavaScript, it's a scripting language, basically is used for providing the interactivity between the web page and the user, right? जिसमें आप वापस सारे C के फंडा पढ़ोगे, right? But उतने डिटेल में नहीं, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी C बेसिक पढ़ चुके हो. यहाँ पे फिर से हमारे पास एरे, फॉर लूप, इफ कंडीशन सब कुछ आएगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस कंसेप्ट. ये कंसेप्ट कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप IT फील्ड में हो. सो C इज द पिलर. स्टिल इफ यू आर नॉट क्लियर विद द C प्रोग्रामिंग, आपके पास अभी भी टाइम है. Clear your doubts. Fine? Okay. So that is the JavaScript. The next is jQuery. jQuery, I would say, it's again the next extension of the JavaScript. जो चीज़ आप JavaScript से कर सकते हो, वही चीज़ आप jQuery से कर सकते हो. बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा लॉजिक यूजर लिख के देता है, एंड मे बी 10 से 12 लाइन का कोड आप सिर्फ एक लाइन में jQuery से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि उसमें इनबिल्ट फंक्शन उतने सारे दिए हैं. सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से जो कर सकते हो वो jQuery से रिड्यूस फॉर्म में सेम चीज़ आप कर सकते हो, एंड और ज़्यादा वे से, मतलब बहुत सारे आगे का नेक्स्ट एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट से, बहुत फर्दर एक्सटेंशन है, एंड करंटली इट इज डिमांडेड इन द मार्केट. एंड द लास्ट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द XML, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अगेन द नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द XML, आई मीन द मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज XML. Right? So in this semester we are going to learn this 4 unit: CSS, JavaScript, jQuery and XML. Thank you. That's it for today. We'll meet soon.